Assalamu alaikum dear. Students Translation Unit number 5. Women Empowerment through Entrepreneurs. कारोबारी ख़वातीन के ज़रिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना। ख़वातीन के ज़रिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना एक जामे और अहम तसव्वुर है जो न सिर्फ ख़वातीन की ज़्यादी तरक्की का ज़रिया बनता है बल्कि माशरती, माशी और कौमी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करता है। मिसाल, एक खातून जो सिलाई या ऑनलाइन बिजनेस करती है वो घर बैठे कमाई करती है और किसी पर इन्हिसार नहीं करती। पहले पैराग्राफ का उर्दू तर्जुमा देखें। ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 1। Entrepreneurship refers to the process of starting, managing and growing a business venture. Entrepreneurship कारोबार शुरू करने का फन। Refers to मुराद है या इशारा करता है। The process of अमल, starting शुरू करना, managing इंतज़ाम करना, and और growing बढ़ाना या तरक्की देना। A business venture एक कारोबारी मंसूबा या नया कारोबार। कारोबार शुरू करने, उसका इंतज़ाम करने और उसे तरक्की देने के अमल को एंटरप्रेन्योरशिप या कारोबारी महारत कहा जाता है। Entrepreneurs are the individuals who identify opportunities, take calculated risks, and bring their innovative ideas to life. Word by word meaning देखें। Entrepreneurs are नए कारोबार शुरू करने वाले लोग होते हैं। The individuals अफराद जो पहचानते हैं। Opportunities मौके। Take उठाते हैं। Calculated risks सोची समझे खतरात। And bring ले आते हैं और their innovative ideas अपने तख्लीकी ख्यालात को to life हकीकत में या अमली सूरत में। नए कारोबार शुरू करने वाले लोग वो होते हैं जो मौक़ों की पहचान करते हैं, सोच समझकर खतरात मोल लेते हैं और अपने तख्लीकी ख्यालात को हकीकत में तब्दील करते हैं। They create products or services to meet market demands, solve problems and contribute to economic growth. Word by word meaning देखें। They create वो तख्लीक करते हैं, products अशिया और या services खिदमात to meet मुकम्मल करने के लिए, market demands मार्केट की ज़रूरियात, solve problem हल करते हैं, मसाइल and और contribute to हिस्सा डालते हैं, economic growth में माशी तरक्की। They create products or services to meet market demands, solve problems and contribute to economic growth. वो ऐसी मसनूआत या खिदमात तैयार करते हैं जो मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करें, मसाइल को हल करें और माशी तरक्की में अपना हिस्सा डालें। Entrepreneurship is not limited to any specific field. It can range from small home-based businesses to large corporations. वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखें। Entrepreneurship कारोबारी महारत is not limited महदूद नहीं है to any specific field किसी खास शोबे तक। It can range ये फैल सकती है from small छोटे से home based businesses घर से चलने वाले कारोबार to large corporations बड़ी कंपनियां तक। कारोबारी महारत किसी खास शोबे तक महदूद नहीं होती, ये छोटे घरेलू कारोबार से लेकर बड़ी कंपनियों तक हो सकती है। पैराग्राफ नंबर 2। For women, entrepreneurship offers more than just financial independence. वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखेंगे। For women, खवातीन के लिए, entrepreneurship कारोबार का अमल, offers पेश करता है, more than इससे बढ़कर, just financial independence सिर्फ माली खुद मुख्तारी। उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगे। खवातीन के लिए कारोबार का अमल सिर्फ माली खुद मुख्तारी ही नहीं बल्कि इससे बढ़कर मौके फराहम करता है। It empowers them to take control of their future, challenge societal norms and become leaders in their communities. Word by word meaning देखेंगे। It ये empowers बाख्तियार बनाता है them उन्हें to take control काबू पाने के लिए of their future अपने मुस्तकबिल पर चैलेंज मुकाबला करना, सोसाइटल नॉर्म्स माशरती उसूल एंड बिकम बनना और लीडर्स कायद इन देयर कम्युनिटीज अपने माशरे में। फुल उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगे।
یہ انہیں بااختیار بناتا ہے کہ وہ اپنے مستقبل پر قابو پائیں، معاشرتی روایات کو چیلنج کریں اور اپنی کمیونٹی میں رہنما بن سکیں۔ Throughout history, there have been many examples of women who embraced entrepreneurship to achieve success and break societal barriers. Word by word meaning. Throughout history, تاریخ کے دوران there have been پائے گئے ہیں many examples بہت سی مثالیں of women خواتین کی who جنہوں نے embraced اختیار کیا یا اپنایا entrepreneurship کاروبار کا عمل to achieve حاصل کرنے کے لیے success کامیابی اینڈ بریک توڑنا اور سوسائٹل بیریئرز سماجی رکاوٹیں۔ فل اردو ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ تاریخ کے دوران ایسی بہت سی خواتین کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کرنے اور سماجی رکاوٹیں توڑنے کے لیے کاروبار کا راستہ اپنایا۔ One of the earliest and the most significant examples of successful woman entrepreneur is Hazrat Khadija رضی اللہ عنہا, a prominent businesswoman from Makkah Mukarramah. Word by word meaning. One of the earliest, سب سے پہلی, and اور the most significant, سب سے اہم. Example, مثال of a successful woman entrepreneur, ایک کامیاب کاروباری خاتون کی. is حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں. a prominent business woman, ایک نمایاں کاروباری خاتون. from مکہ مکرمہ, مکہ مکرمہ سے تعلق رکھنے والی. کامیاب کاروباری خواتین کی ابتدائی اور سب سے نمایاں مثالوں میں سے ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے جو مکہ مکرمہ کی ایک نمایاں کاروباری خاتون تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے who was not only جو نہ صرف تھیں one of the wealthiest individuals اپنی قوم کی سب سے دولت مند شخصیات میں سے ایک of her time اپنے زمانے کی but she was also known بلکہ وہ جانی جاتی تھیں for her wisdom اپنی دانائی کے لیے integrity دیانت داری and leadership اور قیادت in managing سنبھالنے میں a thriving trading business ایک کامیاب تجارتی کاروبار. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نہ صرف اپنے زمانے کی سب سے دولت مند خواتین میں سے تھیں بلکہ وہ اپنی دانائی دیانت داری اور ایک کامیاب تجارتی کاروبار کو سنبھالنے کی قیادانہ صلاحیت کے لیے بھی مشہور تھیں.